and ریڈیو چل رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی لیاقت علی خان has been assassinated. My mother said to Surwardi صاحب کہ Surwardi, what does this mean? He said, it means, Mrs. Faiz, that I can save your husband from the gallows. میں جو جنگ ہوئی تھی اوور کشمیر, اس کی مس مینجمنٹ سے تنگ آ کے تو جنرل اکبر خان اور ان کے جو ساتھی تھے, they were extremely upset because as we know کہ they were poised to take over سری نگر, اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے that didn't happen. The spare parts that were supposed to come for the airplanes, they never arrived. Okay, so the planes were not airworthy. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کرپشن ہوئی تھی between the suppliers and the government officials, اور وہ پیسے کھا گئے spare parts کے, لہٰذا ان کے ہوائی جہاز جو تھے they could not give the army the logistical support from the air that they were supposed to give. یہ چیزیں وہ تھیں جو کہ ایئر کوموڈور جنجوا کی ڈائریز میں تھی, اس کے ثبوت وغیرہ. نسیم اکبر خان was very influenced by the Communist Manifesto and so on. So she decided کہ بھئی اگر یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو مے بی کچھ پولیٹیکل لوگوں سے بھی جن کا میڈیا سے بھی تعلق تھا یا جو کہ مزدوروں وغیرہ میں کام کرتے تھے, ان کے ساتھ بھی رابطہ تھا, ان سے مشورہ لے لیا جائے. So they had a meeting which was in Pindi. There was a discussion کہ بھئی کیا سوچ رہے ہیں. جنرل اکبر خان کی اور ان کے دوستوں کی, جن میں جنرل نذیر بھی تھے اور جن میں بریگیڈیئر لطیف بھی تھے, and they were the top echelon, plus ایک آدھ کپتان آئی تھنک پوشنی تھے اور ایک میجر تھے, میجر اسحاق تھے وغیرہ. سو ان سے گفتگو ہوئی کہ بھئی اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے, اینڈ بہت ڈسکشن ہوئی کہ بھئی جو کمیونسٹ پارٹی ہے یا جو لیفٹسٹ ہیں یا جو لوگ مزدوروں میں کام کرتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں. ایک ڈسکشن ہوئی جس پہ وہ کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچے, بیکاز جو سویلین تھے چار, ان کا they were not very keen on this whole idea. ان کا خیال تھا کہ بھئی ایک ایولیوشنری طریقہ ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہے, and so on, and they said کہ جی الیکشنز آ رہے ہیں, so that is the time in which work should be done in the elections so that you begin to arrive at a government which is more progressive. جہاں تک مجھے پتا ہے 2 میٹنگز ہوئی تھی اور جو کہ جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا. Armed forces were convinced by the 4 civilians کہ this is not a good idea and this should be forgotten and they should work together for a more progressive election result. جب الیکشنز سامنے آ رہے تھے اور it was obvious کہ پاکستان was required to go into the American camp and that there was لیاقت علی خان کو فکر تھی کہ یہ پورا ایک گروپ ہے جو کہ فوج میں ہے جو کہ بالکل امریکن کیمپ میں جانے کا was not willing to do that. So they then cooked up this thing of a conspiracy کہ جی یہ جو ہے یہ گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ وغیرہ. I remember کہ when my father, جب لوگ آئے تھے میرے والد کو اریسٹ کرنے کے لیے, تو صبح کے کوئی 4 بجے تھے یا 5 بجے تھے, تو when they came تو my mother woke us up and said Abu is going, and he kissed us, and وہ سمے تو نیند میں ہم سو گئے تھے. بعد میں اماں نے بتایا تھا کہ انہوں نے میرے ابا سے پوچھا تھا کہ what is this about? So he said it's an election stunt because he'd been writing very strong editorials in Pakistan Times
about what was happening in the elections. So he said, ये election started and they want to pick me up before, ताकि क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ अखबार में, because उनके गुमान में भी नहीं था कि एक चीज़ जो कि कई महीने पहले हुई थी, गुफ्तगू जो हुई थी, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। 3 महीने तक वो गायब रहे और हमें नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, जिंदा हैं, मर गए हैं, क्या हुआ है। It's complete silence and हमारे फ़ोन बजता था तो मेरी अम्मा उठाती थी तो कोई बंदा दूसरी तरफ से कहता था कि you should confess क्योंकि your husband is being tortured and they'll take out his eyes and then they would say we put him on ice and he has confessed so you better confess. इस तरह की चीज़ें होती थी। मैं भी अगर फ़ोन उठाती थी तो इसलिए कि तुम्हारे बाप अपनी माँ से कहो। मुझे तो समझ में इतनी नहीं आती, but I knew that whoever was the other side was threatening me. 3 months later, पता चला कि जी वो आप मुलाकात कर सकते हो और लायलपुर हम गए थे। We were not sure कि वो किस हाल में होंगे, लेकिन when he came in to see us, he was completely okay. और उन्हें बताया था कि उनको solitary confinement में रखा गया था। अखबारों में ये था कि जी ये एक conspiracy थी to overthrow the government और ये लोग जो हैं ये they are traitors and तो इनको ट्रायल करने के लिए it was obvious कि लॉ के अंदर तो कोई प्रोविजन नहीं थी। So उन्होंने जल्दी जल्दी एक एक्ट पास किया which was called the रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस एक्ट और ये भी तय हुआ कि ये ट्रायल जो है ये ओपन ट्रायल नहीं होगा, ये इन कैमरा होगा और ये जेल के अंदर होगा और इन सब को कहा गया था that they are not supposed to utter one word about what was happening in the trial, what the procedure was, who was appearing, witnesses कौन थे, prosecution के भी, defense के भी और के ट्रायल में प्रोसीडिंग्स जो थी वो क्या था, जज ने क्या कहा, क्या पूछा वगैरह वगैरह कुछ नहीं। इट वाज लॉयर का मसला था हु इज़ गोइंग टू डिफेंड माय फादर बिकॉज सब जो मुख्तलिफ कैदी थे वो अपने अपने लॉयर्स ले रहे थे। सो बिकॉज माय फादर वाज एम्प्लॉयड बाय पाकिस्तान टाइम्स तो मियां इफ्तिखारुद्दीन ने कहा कि वी विल गेट वन ऑफ द बेस्ट lawyers from England. He flew in. But when he read the act, तो he said कि इस एक्ट के तहत तो there can be no justice. तो मैं तो अपना टाइम वेस्ट करूँगा यहाँ because there is no possibility of defending anybody if this is the law under which they are being tried. And there was a far-off cousin of my father's who was a lawyer, Nawazish, I remember his name. So he defended my father for a while जब ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन फिर पता चल गया कि भी ये जो है ट्रायल ये तो बहुत लंबा चलेगा। इट वाज ऑब्वियस। सो वो भी फिर पैसे ख़त्म हो गए तो उन्होंने भी माजरत कर ली और कहा कि जी मैं तो नहीं कर सकता। सो देन माय फादर आस्क्ड फॉर दे सेड कि जिससे गवर्नमेंट शुड अपॉइंट ट्रायल। सो उसमें फिर पहले शहीद सोहरावर्दी थे, उसके बाद महमूद अली कसूरी थे। जब ट्रायल ख़त्म हुआ और सेंटेंसिंग की बारी आई तो चूँकि कुछ प्रूव नहीं हुआ था और काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं ना नरम ही ट्रायल गया था, तो ज़्यादातर कैदियों ने अपनी फैमिलीज़ को कहा था कि भी हम एक्विट हो जाएंगे। लेकिन और वो तो जब पता था कि भी इस दिन अनाउंस होना है जजमेंट, तो उस दिन फैमिलीज वहाँ पहुँची। मेरे फादर ने मेरी अम्मा को लिख के कहा था कि तुम मत आना बिकॉज ही न्यू कि दे विल बी सेंटेंसिंग। ये पता था कि 4 बजे ज़मीमा निकलेगा जिसमें जजमेंट होगी। सो आई रिमेंबर कि ज़मीमा निकला तो जो घर के नौकर थे वो पढ़ रहे थे और मैंने जाके तो पूछा। मुझे आई रिमेंबर कि मैंने ज़मीमा पकड़ा एंड आई सॉ दैट माय फादर वाज सेंटेंस्ड टू 4.5 years or 5 years in jail. और फिर ये भी देखा कि भी वो जनरल नज़ीर जो थे उनको they let him till the rising of the court of the sentencing thing. He was very well connected
And then the wife, Mrs. Akbar Khan, was released. Everybody else, the civilians were given 5 years, whatever it was, and बाकियों को लंबी sentences, life और ये वो के 2 साल serve करने के बाद sentence to the Constituent Assembly declared कि वो जो कानून था, it was illegal, null and void. वो announce हुआ तो habeas corpus किया. My mother went from Lahore. एक Justice शबीर थे, उन्होंने कहा कि जी habeas corpus आपका मंजूर हो गया, आप जाएं और जाके अपने मियाँ को जेल से लेके आए. So my mother went to Montgomery और वहाँ पे पहुँचे तो she had taken the court order. तो उन्होंने बाहर से मना कर दिया और कहा कि उनको री-अरेस्ट कर दिया एक और केस में और वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे. दूसरे दिन फिर my mother went back to the high court. फिर habeas corpus उसके खिलाफ दायर किया. तो अब की दफ़ा जस्टिस के आनी थी और मेरी अम्मा ने कहा कि भाई what guarantee is there that my husband will be released with this court order? तो उन्होंने कहा Mrs. Faiz, this is my guarantee now. Only if there is martial law can the government refuse. So then she went and they were released and they came back late in the evening.